And then she is actually, Susan says, I see you have been bitter about it. Bitter about what? About the institution of marriage. Lucy जो है शादी के बारे में और जेंट्स के बारे में, men के बारे में in general, मतलब particular about Charles, her ex-husband, उसके बारे में bitter things कहती रही है Primrose को. That is why Primrose was, you can say, herself a bitter girl. Primrose, I have been forced to give a lot of thought lately to the subject of marriage. I don't mind telling you, I think marriage is a jolly fine institution. So, Primrose के जो ideas हैं अपनी mother से clash करते हैं. There is a conflict. Lucy, her mother had a bad experience of marriage. क्योंकि she married Charles Ashton, who was a very charming man, having very charming looks. He was very handsome, very good looking, but it turned out that he was not a good man. He was a fraud, a cheat. Their marriage did not last long, and after when Primrose was still young, they were divorced. तो लूसी का जो अपना शादी का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा था और यही बिटरनेस वो इम्पोज कर रही थी प्रिमरोज के ऊपर. बट प्रिमरोज इज नॉट अ, यू कैन से, हमारे चिल्ड्रन आर नॉट आवर, यू कैन से, दे कैन नॉट बी आवर डुप्लीकेट. दे हैव देयर ओन माइंड सेट, they have their own views, thoughts, ideas. So Primrose says that I think that marriage is a jolly fine institution. This brother of Clarice's, Primrose, of course. I don't mean marriage in general. I mean marriage with John. He makes me feel all funny inside. So she's saying कि हर किसी की marriage मैं नहीं कह रही, लेकिन एक specific person whom I have chosen and selected, and his name is John. और वो Clarice का भाई है, the girl who had came before. What an expression! Love's an expressive thing. He hates me but I matter. That's love. So he's a loving, caring man. ये बात पता चल रही है. So Susan, I can excuse a great deal in a girl who is evidently emotionally disturbed. So Susan is saying कि I can excuse कि एक लड़की जो ज़्यादा emotionally disturbed थी, लेकिन Primrose, by the way, I'm sorry I was rude to you before I went out. I had to be. So Primrose is saying कि I'm sorry I was rude to you, and now she is herself apologizing her aunt. Smoke Screens is the title. So आगे वो खुद explain कर रही है उसको कि मुझे rude होना था. And Primrose, well, you're not quite a fool, aunt. Susan, dear me, you were watching and I don't want to be watched. The cuttlefish, isn't it? So, and then she says that you were watching me and I don't like being watched. You were actually criticizing me, नजरों से देखे जा रही थी उसको, उसके fault finding करना, उसको taunt करना, criticize करना. So अपने defense में actually she became rude, or also because she needed time to, she was undergoing this emotional phase and mentally she was tensed. So, and then like a smoke screen, एक cuttlefish क्या करती है, अपने इर्द गिर्द इंक फेंकती है अपने आप को छुपाने के लिए बाहर के अटैक से. अपने इर्द गिर्द पानी में इंक की तरह फ्लूइड डिस्चार्ज करती है ताकि उसके पीछे वो छुप जाए, अपने आप को छुपा ले बाहर से अटैक को. और हम भी अक्सर अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं. समटाइम्स आवर रूडनेस इज एक्चुअली अ डिफेंस in order to protect ourselves from the harsh attacks from outer world, लफ्ज़ों के attacks से अपने आप को defend करने के लिए. So, and then I was piggish about your headache, I'm sorry, but when I go out I saw we couldn't go on. I so absolutely had to have it out with Lucy about John and so shall I go? And then please Susan, and then she tried to be kind to each other, and Lucy, that's childish. Primrose, and then she has turned on the song on the gramophone, and Lucy says that's childish. Is it? So please, we didn't say something. It did this with music. So she turns off the gramophone, and then things can't be sprung on you out of sunshine. Like please, and then like something leaping on me, something out of dark. And Lucy is feeling upset. She is feeling depressed. Lucy is saying कि ऐसे लग रहा है अंधेरे से कोई चीज़ जो है मेरे ऊपर आ रही है. And Primrose says कि
नहीं, डोंट थिंक आउट दिस लाइक दिस. चीज़ें जो हैं वो सनशाइन से भी आ सकती हैं, खुशियाँ भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग विल बी सो sad and depressive and like this. Things can come out of happiness too. In fact, you will really feel awfully young to be a mother-in-law. So, being tactful are you know you are young, but I did think sending and क्लारिस को भेजा उसने अपने भाई की बातें करने के लिए कि उसके भाई के बारे में बताए वो तो एंड देन ही क्लारिस ने इतना बता दिया था कि उसका भाई जो है वो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है. ही इज़ लाइक अ कैन से बुल. ही इज़ सो डार्क इन कम्प्लेक्शन एंड किसी किस्म की भी ब्यूटी प्रोडक्ट उसको ठीक नहीं कर सकती. सो एंड ही वॉज ऑलवेज अगली. सो उसकी अगलीनेस के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल बता दी थी क्लैरिस ने. एंड Primrose, I have not insulted you. If I had picked a charming man, had someone told you that your father, and then Primrose is saying that I have not chosen a charming man, just like you. I would have insulted you actually if I had chosen a charming man. And Primrose says, and she's now lying down and looking at the ceiling, and then she's expressing her love for her mother and her self-made nature. अपनी माँ को की थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता रही है कि my mother married a man named Charles. I don't blame Charles either, and their love couldn't. Charles was born the way he was, and he was not a marrying man. लेकिन अपनी माँ की को अप्रिशिएट कर रही है कि ये सारी स्ट्रगल की she raised me and जिस तरह मुझे रखा और I can understand. She understands the struggle her mother has made for her, and she understands that the marriage, her mother's marriage couldn't go well, and she doesn't blame anyone for it. She is quite an understanding girl. She's a sensible girl. So she says, लेकिन मेरी जो mother है वो marrying woman नहीं. She doesn't think good about marriage, but I'm a marrying woman. My mother would prefer me to remain unmarried, but I'm a marrying woman, just like my aunt. And और जब आपकी mother खुद एक independent, strong lady हो, it becomes difficult. When I'm a marrying woman and my mother is actually not. My mother is an independent, strong lady, and who has a career of her own, and she protests against the necessity of marriage. So यानी कि उसकी माँ जो है वो शादी के बारे में कुछ इतनी अच्छी राय नहीं रखती क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस शादी का अच्छा नहीं रहा. So and then Lucy says कि no, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते. And Primrose says, thanks Lucy, that's a lot from you. That's an awful lot. I was thinking, and she was worried actually कि वो इसकी मदर से अपनी मदर से कैसे वो डिस्कस करेगी ये चीज़ क्योंकि उसकी मदर जो है she doesn't like man. Lucy had a bad experience of marriage and bad experience with one man. लेकिन at least Lucy ये बात कह रही हैं कि all men are not alike. And then Primrose is talking about John. कि John is different from Charles. He's got an ugly face, but he's very you can say he's a very a good-natured person. It was an accident that she fell in love, she explains, and then she says that it's a losing game being a mother. You're a baby, I lost my baby, then you were a helpless child, I lost her too. Finally जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वो उनकी फेज गुजरती जाती है. बच्चे से बड़े हो गए तो वो बेबी नहीं रहे डेफिनेटली. जब स्कूल गोइंग हो गए तो और इंडिपेंडेंट हो गए, और जब स्कूल गोइंग से यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए, वुमेनहुड में आ गई, तब वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई. सो शी लॉस्ट द चाइल्ड. एक्चुअली वो चीज़ तो नहीं रहती ना, वो रिलेशन भी चेंज होता जाता है. सो देन शी सेज के but now that you can say at marriage age पे पहुंच गई, so then she says I have no need to complain about anything. I have got my taxi cabs, I have got my work, I have got some business to do, which I will continue doing. And then ये जो आखिर में उसने बात की है वो ये शो कराने के लिए की है Primrose को कि Primrose is independent to do whatever she wants to. And unwillingly वो independence दे रही है, although she does not want to lose her daughter.
he has only got one daughter, और वो इसके बगैर बगैर she will become very lonely. But still, this is a smoke screen जो यूज़ किया है यहाँ लूसी ने in order to tell her daughter कि and she's pretending कि daughter की इतनी भी importance नहीं है, मेरा अपना business है, मैं अपना टैक्सी कैब चला रही हूँ, तो अगर वो शादी कर भी लेती है तो सुजन को लूसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is a kind of smoke screen which Lucy has used in order to hide her feelings. So Primrose says, I was an awful ass. I was worrying that you will not be happy and you will be upset if I talk about my marriage. And then Lucy is saying, I shall be glad to see your future husband. Primrose thanks, I'll bring him. And Lucy, she takes her, she wants to stop her. Oh, this is actually now you can say a smoke screen. Actually, she does not willingly want to let her daughter go. She says, taxi cabs, and she believed me. How can it be कि किसी के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा important business हो? But she told this to her daughter कि my taxi cabs are my business which are important for me, so that her daughter may feel that Lucy has willingly given her independence to choose her marriage partner and to get married. Smoke screen का नाम अब ये second time आया है कि धुएं का पर्दा. But I'm behind the screen. You, John, it's very simple, John. If you are not kind to Primrose, I shall shoot you. And then title of the play, smoke screen. Smoke screen means धुएं का पर्दा. It's a wheel of smoke behind which a character hides her real personality and feeling. All the characters in the play, they have their smoke screen. Aunt Ashton Aunt Susan जो है, she pretends to be kind and sympathetic, but she is actually enjoying her sister's bad condition. And the characters in the play, all the characters they hide their real feelings and pretend to be what they are not. तीनों ही मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मोक स्क्रीन के पीछे हैं. और देखा जाए तो चार्ल्स एस्टन देखने में बहुत गुड लुकिंग था, वो भी एक स्मोक स्क्रीन हो जाती है क्योंकि अंदर से वो अच्छा शख्स नहीं था. एंड जॉन द वन whom Primrose has selected is apparently very ugly, but inwardly he is a good man. So ये themes में भी है. All the characters in the play have dual personalities. Generation gap एक मेन थीम है जिसकी वजह से conflict आ रहा है सारे कैरेक्टर्स का आपस में. और इफेक्ट ऑफ ब्रोकन फैमिलीज एंड चिल्ड्रन के जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं उनमें एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं. एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, सिचुएशंस को टैकल करना की मुश्किल होता है उनके लिए. दे फील इनसिक्योर and they might start misbehaving or become rude and disrespectful because it can be also a tool for their defense. अपने आप को defend करने के लिए भी कोई rude हो जाता है in case of Primrose. So appearances can be deceptive is another theme. And Aunt Susan के बारे में कुछ points. Aunt Susan is 50 years old. She believes in Victorian morality. She is a conservative lady who has come from the countryside. और उनके ख्यालात ये हैं कि बच्चों को strictly deal करना चाहिए. अगर वो बदतमीजी करें उनको मारना भी चाहिए. और वो लूसी को ये मशवरा भी देती हैं कि power of purse use करें Primrose के ऊपर कि उसको जायदाद में से अपनी कुछ भी ना दे ताकि वो खुद ही सुधर जाए. So she is quite, you can say, strict. And Victorian उनके views हैं, but she has a dual side. She pretends to be very civilized and she pretends to be a person having very good morality, but surprisingly वो झूठ बोलती हैं अपने सर के दर्द के बारे में ताकि वो रोक सकें Primrose को घर से ना जाए. और वो खुद उसका बैग पीछे छुपा के बैठी होती हैं Primrose को रोकने के लिए. And then she also is, you can say, criticizing and taunting Primrose, and then she apparently sympathizes with her sister, but inwardly she enjoys her sister's problems. तभी उसको एक टाइम पे लूसी कहती हैं stop looking so complacent, क्योंकि वो actually enjoy कर रही होती है ये situation. वो इसको actually दिल से नहीं वो care कर रही होती है, sympathize कर रही होती है.
And then Primrose is the main character. She is the heroine of the play, and she is 20, representative of the younger generation. और अपनी मर्जी की मालिक है. She wants to do as she likes. Independent है, and she will not take dictation from anybody. किसी की जो है कि ऐसे करो वैसे करो इस तरह की बातों में नहीं आने वाली, because actually she knows what she wants. There is a reason for her being, you can say, being so independent, because she has her own experience. She knows herself. She is her better judge. She knows what is good for her and what is bad for her. She pretends to be rude and spoiled girl, but later in the story she apologizes her aunt, and it is revealed that she was actually feeling insecure and feeling, you can say, sort of disturbed by her aunt's comments and thorough criticism and thorough, you can say, glare जो इस तरह वो देख रही थी उसको critical नज़रों से, तो उससे वो upset actually हो रही थी, nervous हो रही थी, तो वो अपनी defense में वो rudeness show करा रही थी. So this is something psychological, if you understand, कि actually वो rude नहीं है. So she is actually more sensible than her mother, because she chooses a person not on the basis of his looks, कि अपने जो पार्टनर की वो सिलेक्शन करती है अपनी माँ की तरह, वो फिजिकल पर्सनालिटी की बेस पे, उसकी चार्म्स या गुड लुक्स या हैंडसम होने की बेस पे नहीं सेलेक्ट करती है अपना पार्टनर, बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनवर्ड गुडनेस, कि उसने अंडरस्टैंड किया है एज अ पर्सन जॉन को, and then she has selected John as a partner. And then the character of Lucy Aston, and Lucy is a 40 years old woman. She is independent, she is liberal, she is self-made. She got divorced from Charles Aston. Her marriage did not last long. It was a bitter experience for her, as Charles Aston was a very charming, handsome man, जो बाकी ख़वातीन को भी काफ़ी उसमें चार्म नज़र आता था, और वही चार्म देख के लूसी ने भी अपेरेंटली डिसीव होके उससे शादी की थी. बट एज द मेन थीम ऑफ द प्ले इज ऑल्सो अपीयरेंसेस आर मिसलीडिंग. एक स्मोक स्क्रीन भी तो हो जाता है एक अपीयरेंसेस कि देखने में वो बहुत अच्छा गुड लुकिंग था, बट अंदर से ही वॉज नॉट अ वेरी गुड पर्सन. ही वॉज अ चीट, ही वॉज अ फ्रॉड, ही वॉज नॉट सिंसियर इन लव, ही वॉज की इनफाइडेलिटी थी, जिसकी वजह से हर मैरिज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. एंड बट लूसी एस्टन वॉज अ सेल्फ मेड स्ट्रॉन्ग वुमेन. किसी किस्म की एलमनी लेने से उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपने एक्स हस्बैंड से कोई भी शादी के बाद एलमनी जो दी जाती शादी ख़त्म होने के बाद कि वो थोड़े से पैसे जो दिए जाते हैं वो नहीं उसने ली. शी रिफ्यूज एनी काइंड ऑफ एलमनी एंड शी एस्टेब्लिश्ड हर ओन बिजनेस, कि अपना खुद उसने काम किया, मेहनत की और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, किसी से कोई पैसे नहीं मांगे. और शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन. एंड शी आखिर में ये भी स्मोक स्क्रीन एक अपने गिर्द करती है कि ये इसकी बेटी जो है प्रिमरोज, शी इज़ वरिड कि मेरी जो माँ है शादी को अच्छा नहीं समझती, जेंट्स को अच्छा नहीं समझती, मेरी आई एम द ओनली चाइल्ड शी हैज़, और मेरी शादी के भी लिए वो इतनी खुशी से राज़ी नहीं होगी, मेरी जो मदर है अपसेट होगी. बट ये क्या कहती है एंड में उसको इनकरेज करने के लिए, इंडिपेंडेंस देने के लिए, ताकि वो एंजॉय कर सके अपनी लाइफ. शी सेज कि आई हैव माई ओन बिजनेस, आई हैव माई टैक्सी कैब्स, इवन इफ यू मैरी आई विल कीप रनिंग माई बिजनेस, और मैं अपना काम करती रहूँगी, इट विल मेक नो डिफरेंस टू मी. ये बात कहना कि आई हैव माई टैक्सी कैब्स एंड इट विल मेक नॉट मच डिफरेंस टू मी इज एक्चुअली अ स्मोक स्क्रीन which she has used to hide her real feelings. जब प्रिमरोज परेशान थी कि वो शादी की बात जब अपनी मदर से करेगी, तो इसका ये जवाब देना is actually a smoke screen, because she was afraid of losing Primrose, and she is after all a very loving and caring mother. She does not want to lose Primrose, but still she hides her real feelings and gives this independence to Primrose and agrees for her marriage with John.